celebrate Ambedkar Jayanti and Vaisakhi festival. So, Honorable In Charge Headmaster Mrs. Savita Sharma ji, worthy colleagues and my lovely children, very pleasant afternoon to all of you. Good afternoon, students. So, students, as we all know that today we all are gathered here to celebrate Ambedkar Jayanti and Vaisakhi festival. For that, first of all, I wish you all happy Ambedkar Jayanti and happy Vaisakhi. So, students, if we talk about Dr. Ambedkar, I feel myself very small to say anything. The first moment we remember the name Dr. Baba Saheb Ambedkar, the first phrase that strikes on my mind is he was the architect of the Constitution. That's why he was known as Father of the Constitution. So he was not only a social reformer, he was a politician, he was a social reformer, he was a scholar par excellence, he was a great leader, great personality, multi-talented personality. वो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं दीक्षा 10वीं कक्षा की छात्रा आज आपके सामने अम्बेडकर जयंती पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के वो गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम मीराबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 17 वर्ष में ही हुई थी। वह हिंदू महार जाति के संबंध रखते थे, जो अब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा की और उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में Ambedkar Jayanti is not celebrated only in India, but it is celebrated all over the world. He fights for the social justice, injustice, and justice, and education for all throughout his life. That's why he was called a great personality, a multi-talented personality, and remembered all over the world. Now, for the next. अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। Respected teachers, friends, and all my dear sisters, brothers. Today I am Muskan from class 10th is going to represent my views on Ambedkar's Jayanti. Baba Saheb Ambedkar is known as Bhimrao Ramji Ambedkar. He was a social reformer and inspired the Dalit Buddhist movement in India. He is the father of the Indian Constitution and the brain behind the drafting of the Indian Constitution. He was the first law minister of the country in the year 1947. Today I am Kanu from class 10 going to share my views on Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti and honor the man who gave India its constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar, he was not just a leader but a visionary who worked tirelessly to create a society based on equality and justice. Ambedkar Jayanti, which is observed on 14th April, is indeed an auspicious day for all the Indians. It is celebrated nationwide by the Indian people to pay